हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गूगल एड्स बनाते समय ऐसी कौन सी सावधानियां हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमसे होती हैं और हमको उनसे रिलेटेड कौन से कॉशंस रखने चाहिए ताकि हम जो ब्लंडर्स हैं जिसके कारण लाइक गूगल एड्स में यू विल लॉस्ट योर मनी, सो उनसे बचा जा सके। लेट्स कंटिन्यू इन द वीडियो। So guys, here are few things which you have to focus on, right? The first thing is conversion tracking. You have to track each and every conversion properly, like whatever the major conversions you are doing, what are the minor conversions you are tracking, it should be managed properly. Sometimes what happens, if the ad account is like, we are working on the ad account for a long time and we are like doing like so, all the conversion got matched up, whether you are doing it using tag manager, doing directly from the analytics, or like you're like installing the code in directly to the website, whatever the way you are using. But sometimes what happens, it's got messed up and like we got confused, right? So you have to manage all the conversion tracking stuffs very well. Okay, so that when you will get the end result, it will be clear like how much conversion you got. And yeah, so and the second thing is figuring out what to use, राइट? क्या हमको यूज करना है। कई बार जैसे कि जो मैच टाइप होता है, जो कीवर्ड का मैच टाइप होता है हम यूज करते हैं, तो कई बार जो लाइक बहुत से लोग ब्रॉड मैच पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, दे डोंट यूज लाइक फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, राइट? बट ब्रॉड मैच पे बहुत ज्यादा रिलाई करना, आई एम नॉट अगेंस्ट ब्रॉड मैच, मैं ब्रॉड मैच के अगेंस्ट नहीं हूं। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, इन दैट केस यू कैन यूज ब्रॉड मैच, आप ब्रॉड मैच का यूज करिए, कोई इशू नहीं है। बट when you are starting out, you are like creating a Google ad campaign for your client, or might be you have a not strong negative keyword list. In that case, it will like eat up your money, right? Broad match, so means अनवांटेड सर्च टर्म में आपका एड शो हो, सो बेटर है कि हमारा जो कीवर्ड है वो लाइक टाइट हो. सो लाइक हैविंग अ एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच इज बेटर देन हैविंग अ ब्रॉड मैच. ओके, द नेक्स्ट इज when you are like working on an ad campaign, in that case you have to like check all the dimensions. All the dimensions means like for a long time someone else was working on the ad campaign. कोई और पर्सन था जो कि ad campaign में वर्क कर रहा था. अभी आपकी बारी है कि आप उस ad campaign को हैंडल करें या मैनेज करें. सो इन दैट केस बिफोर स्टार्टिंग you should like go through each and every dimensions. like if कोई geographical region excluded है, यदि कोई डिवाइस एक्सक्लूडेड है, यदि कोई एज ग्रुप को एक्सक्लूड करके रखा है, वेदर वो जो डायमेंशंस का एक्सक्लूजन है या लाइक इन केस लाइक किसी पर्टिकुलर डायमेंशन पे बीट बढ़ा के रखी हुई है, तो वो आपके एड के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं, मतलब आपके एंड गोल के साथ, आपका जो एड कैंपेन चल रहा है उसका जो अल्टीमेट गोल है उसके साथ वो अलाइन कर रहा है कि नहीं, इसको प्रॉपर्ली इन डेप्थ चेक करना चाहिए. ठीक है. Or the next one, the fourth one is ad strength. Sometime what happens, Google suggests us so many recommendation, right? So जरूरी नहीं है कि हम हर एक रिकमेंडेशन को ओबे करें, क्योंकि like generally Google also have his own money model, right? He try to take as much money from you, right? So इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हम हर एक रिकमेंडेशन को माने, राइट? क्योंकि जनरली एड स्ट्रेंथ यदि आपका 100% होगा, मीन्स इन केस जितना ज्यादा अच्छा एड स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा कंट्रोल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी स्कोर, आई एम टॉकिंग अबाउट एड स्ट्रेंथ, राइट? एड स्ट्रेंथ जितना अच्छा होगा, कंट्रोल उतना ज्यादा गूगल के पास होगा आपके एड अकाउंट का. देन गूगल विल डिसाइड हाउ ही वांट टू शो योर एड्स टू योर क्लाइंट, टू योर टारगेट कस्टमर, राइट? बट समटाइम व्हाट हैपेंस, एड स्ट्रेंथ जितना लो होता है, कई बार
कई एड अकाउंट्स में ऐसा मतलब देखा गया है कि एड स्ट्रेंथ जितना लो होता है उतना ज्यादा कन्वर्जन उसमें होता है एज कंपेयर टू दोज एड अकाउंट्स विच हैव 100% एड स्ट्रेंथ। ठीक है, एड स्ट्रेंथ आपका क्वालिटी स्कोर नहीं है, क्वालिटी ऑफ योर एड अकाउंट नहीं है वो, लाइक हाउ मच यू आर ओबेइंग गूगल, दैट इज यू कैन से, राइट। नेक्स्ट इज always use always like go through with your negative keyword list. Sometime what happens, we are like running a Google ad from last 6 months, right? अभी क्या हुआ कि नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट हमारे पास है, हमने माइंड भी कुछ कीवर्ड्स नेगेटिव लिस्ट में ऐसे डाल के रखे थे जिसकी हमको जरूरत नहीं थी, हमको अपना एड शो नहीं करना था, पर इन केस आपने लेटर उस एड अकाउंट में चल के कुछ कीवर्ड्स ऐड किए जो कि कंफ्लिक्ट करने लगा आपके नेगेटिव लिस्ट के साथ। ठीक है, तो प्रॉपर तरीका ये है कि आप अपने नेगेटिव लिस्ट को बीच बीच में गो थ्रू करें ताकि उस पे जो आप कीवर्ड ऐड कर रहे हैं अपने एड अकाउंट में उसके साथ कंफ्लिक्ट ना हो, राइट। क्योंकि फिर उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार कि कीवर्ड है पर उससे सर्च टर्म्स, लाइक वी आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ सर्च टर्म्स, राइट। नेक्स्ट है, yes, it's not necessary to obey all the recommendation from the Google, right? Whatever are you feel good, आप उसको अप्लाई करिए, जो कि आपको लगता है कि not correct, you have to ignore that, right? Last one and seventh one is do not rely too much on AI, right? So in Google ads especially, like AI initially when you like AI is a kind of naive person who is learning from you, or it is a kind of child who is learning from you or from your data, right? So AI needs data to work upon, right? Then only it can take decisions, okay? So यदि जितना ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कंट्रोल अपने हाथ में रखें अपने एड अकाउंट का, राइट। सो वेन एवर यू आर लाइक स्टार्टिंग योर एड अकाउंट, और आप यदि लाइक गोइंग विद मैक्सिमम कन्वर्जन और लाइक any other like target CPA or target ROS, whatever the bidding strategy you are using, so if your ad account does not have data, how it will going to work, right? So it needs data, and so better to start with manual CPA, or if you want to add AI partial, so you can add enhanced CPA, CPC, right? So in this way you can manage your ad account, and in this way you can manage your ad account, and better to give some data to AI, okay? So if you want to handle your, like if you're willing someone professional to handle your ad account, your ad campaign, you can connect with me in the given number. आप दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड लाइक वी कैन डिस्कस हाउ लाइक वी कैन गिव यू extra edge on your ad account or in your end goal of your business, okay? Thank you very much.